afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. बाकी लोग कहाँ गए? सिर्फ 3 लोगों ने ज्वाइन किए हैं. Tell your friends to join. Shall we start? जी मैम. Okay, fine. So yesterday we have seen input in Python. How do we take input from user? Yes, Using input keyword, ma'am. it is input function. Okay. So using input function, we accept input from user, and we have seen um, various formats in which you can accept the input. जैसे पहले तो हमने simple input देखा, how to accept simple input. Then we have seen how to convert it to other data types, because when you accept any input it is in string format, right? Then how to accept input with default values, and how to read multiple inputs in a single statement. Okay, these things we have seen about input. Now today we'll start with output. So as you know, because we have already used this print function, right? So in output, for output in Python, this print function is used. Okay, using this print function, we can print any string, we can print any value, we can print variables, we can print results or expressions. Okay, so this function allows you to display information to the user. So that information can be text, it can be numbers, variables, or the result of expression. Okay. So the very basic usage, if you see, अगर आपको print करना है simply hello world, तो आप what we will do, print in bracket, this is one string, right? So this is how we can print a string on the screen. On your output console or on your output screen, you can display any message using print function. Okay, now if you want to print variables, let's say in this example we have how many variables? Yes, how many variables? Two, two variables. Two variables, name and age, right? So we can directly print these variables like this: print name, print age. Okay, then moving further, if you want to print multiple items, जैसे name, after that you want to print value for name, and age, after that you want to print value for age, you can do like this: in double quotes name, this will be printed, then value of name will be printed, then age, this string will be printed, and value for age will be printed. Just a second. ओके, सो ये प्रीवियसली जो हमने देखा, इसमें क्या होगा, ये जो सेकंड नंबर का है प्रिंटिंग वेरिएबल्स, उसमें कैसे प्रिंट होगा? Alice and 20. तो सिंपली इसका आउटपुट होगा अलाइस, एंड इसका होगा 20. ऐसा आपको आउटपुट मिलेगा.
लेकिन if you see this third statement, print name and age, तो ये कैसे print होगा? पहले तो ये print होगा name, then colon Alice, right, and then age colon 20. Getting the difference? ये string print होंगे, उसके बाद उसके values print होंगे. Okay, now in print statement you can concatenate the string. Concatenation means merging the string by using plus operator, by using plus symbol you can concatenate. Okay, तो यहाँ पे क्या किया है हमने? Name plus name, then again plus age plus str of age. Okay, now this is important because ये जो name है that is a string, right, लेकिन ये age क्या है? Age is a number, it is an integer, right? So here while string concatenation you cannot directly give age, it will give you some error, value error, right? So whatever number you want to print you have to convert it to string. And how to convert it to string? By using str function, right? So str of age, because here we are using string concatenation, so all the values, all the variables that you are giving should be in string format. Okay, so this is not issue because it is already in string. This is variable but this is the string variable, then this is again one string, and then this age is not string but we are converting it to string, that is why now all these four strings we are concatenating with each other. Okay, तो इसका आउटपुट कैसे होगा? Name, then Alice, right, then in this first there is a comma, then age and str of age. Okay, so in output you will not see the difference, लेकिन यहाँ पे अगर आप string concatenation कर रहे हो using plus operator तो you have to convert it to string. Okay, so we use plus to concatenate string, and here you should note that age must be converted to string using str function. Clear? Now after this we'll see how to print formatted string. Okay, तो जैसे हमने कल देखा था, कल एक प्रोग्राम में देखा था, we were using f. Okay, this is called as f string. So how to use f string? Inside print you have to first give f, you have to first write f letter, and then in double quote you can write your string. Okay, but here along with string you can print values of your variables, but these are called as placeholders. When we give curly bracket and inside that we give name, or whenever curly brackets are there, these are called as placeholders. These are placeholders for some variables. Okay, these curly brackets are placeholders. So in formatted string you can give placeholders where you will write variables, and in the output values of those variables will be displayed, right? तो ये जो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का जैसे आउटपुट है सेम वैसे ही आउटपुट आपको मिलेगा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग से, लेकिन दिस इज अनदर वे टू प्रिंट some output on the screen. Okay, so these f strings use curly brackets to embed expressions inside string literals, and it is prefixed by f. Okay, so you have to write f before giving any string. Got it? Any doubt? No, ma'am. Okay. And अब then इसको एक बार एग्जांपल से समझा दीजिए। sorry, मैम इसको एक बार एग्जांपल देके समझा दीजिए ऐसे कौन सा? फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का। Formatted string. Yes, ma'am. Okay. After this we will be writing some programs, then it will be clear. Okay. So ये Okay. example इसमें क्या है कि see here what we have done, we have just concatenated the string using plus operator, right? Instead of that what we are doing here, we are giving these placeholders, right? What is this name? Name क्या है?
placeholder. With No, these curly brackets are called as placeholder. But what is name? Variable. And what is variable, age? Age is also variable, variable. right? So in curly brackets, in placeholders, we are giving variables. So at the time of, see, when you will execute this print function, it will again print like this only, name colon Alice comma age colon 20, ऐसे ही आउटपुट प्रिंट होगा. दिस इज जस्ट द अनदर वे टू प्रिंट योर आउटपुट, प्रिंट योर मैसेज. गॉट इट? yes, ma'am. Okay. And the last way to print your output is using str.format. Okay, so this str is nothing but the string, whatever string you want to print, and then dot format. And in this format, we will give variable names. Okay, so see how to use this print. Okay, and then you are giving some string, right? So what is that string? Name. Okay, again here we are using curly brackets. Okay, but these curly brackets are empty curly brackets. Okay, there is nothing inside it. These are also placeholders. Okay, and then dot format, we will give name and age. So this is the first one. So this first variable, value of first variable will be placed here. This is second, so this value of second variable will be placed here, so on. You can give n number of curly braces and you can print n number of values using this formatted string. ठीक है? So how this output will be printed? Name again colon, in place of this curly braces, first empty curly braces, value for name will be replaced. So Alice comma age, and in this second placeholder value for age will be placed. So age 20. Okay, we are using here this format function. Okay, so this str.format use curly braces as placeholder for variables and which are provided as argument to format. जैसे C में भी आपने देखा होगा, C में भी हम प्रिंट एफ करते हैं तो %d करते हैं, दैट इज द प्लेस होल्डर, एंड एंड में आप उसके सारे वेरिएबल्स के नाम दोगे, राइट? सो वन बाय वन इन ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आप दोगे, अगर आपने यहाँ पे पहले एज लिखा तो ये नेम के जगह पे एज ले लेगा. ओके, इट फॉलोज द ऑर्डर. जितने आपके पास करली ब्रेसेस है, दोज शुड मैच number of variables you are giving here in format. Okay, so if you are giving here two curly braces and if you are giving only one value here, it will be some error. So this number of curly braces should match number of variables in format. Got it? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. after this we will see some practice question, but before that, have you installed Python on your system? Python और Visual Studio Code इंस्टॉल किया आप लोगों ने? यस मैम, बट उसका जो पाथ है वो सेट नहीं हुआ है मुझसे. पाथ सेट नहीं हुआ है, लेकिन इफ यू अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा. दोनों मैंने डाउनलोड कर लिया बट वो ठीक से वो कर नहीं रहा है. बस इंस्टॉल नहीं हुए हैं? हो गए हैं, हो गए हैं. हो गया ना, तो पाइथन का प्रोग्राम उसमें रन करके देखा आपने? यस. Okay, raise your hands. How many of you successfully installed Visual Studio and this one, Python? Raise your hands. Only 4 people are there in the meeting. Have you installed Python? मैंने कल ही आपको बताया था Python और VS Code इंस्टॉल करना है. मैम कल पीसी खराब हो गया था इसलिए कर नहीं पाया था. ओके, लेकिन आपके पास लैपटॉप है, पीसी है अभी? पीसी है मैम. ओके. Nitesh, you have installed, right? Yes, ma'am. Okay.
Okay, you have also installed Visual Yes, ma'am. Studio. Okay. So I will give you some question. You have to write program and then share your screen to show me that program. Okay. I will help you, but you have to write the program because Python is not a theoretical subject. It is a programming language. Unless and until you are not doing program by yourself, you will not learn anything. Just theoretical lecture से आपको Python कभी भी नहीं आएगा. Okay, so for that you need practice for any programming language. So after completing some topics, we will have some practice session for your practice purpose. Okay. So I have some questions. I will show you the question, and you have to write program for it, or we together can write program, but you have to execute on your end as well. Okay. I can show you on my end, but you also have to execute those programs on your end. Okay. Is it okay? ओके मैम. Is my screen visible? Yes, ma'am. दिख रही है मेरी स्क्रीन आपको? I think it is not visible. No, ma'am. Okay, I'll share my screen. यस मैम दिख रही है. Okay. So the first Yes. question is very simple. Write a Python program that takes two numbers as an input from user and print their sum. तो आपको ये प्रोग्राम करना है, मतलब हम साथ में भी कर सकते हैं, बट यू हैव टू डू इट ऑन योर साइड एज वेल. ओके, हम यहाँ पे भी करते हैं. So if you have installed Python, just create one py file. Okay, कुछ भी नाम आप दे सकते हो. ये विजुअल स्टूडियो कोड दिख रहा है आपको मेरा? यस मैम. We'll solve question 1 here. So what is question 1? Write a Python program that take two numbers as input from user and print their sum. Very simple. Here I have given expected output key. In what format the output is expected, right? So enter first number, enter second number, we will accept input and then we'll print the sum. Okay. So what should be our first statement here? Yes. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए यहाँ पे? मैम है कि इनपुट फर्स्ट नंबर के लिए Right. Input. We will write input. Then enter first number. Okay. Then we have to store it in some variable, right? A. Then what should we do? Yes. प्लीज रिस्पॉन्ड. और आपके साइड पे भी करते रहो, जिन्होंने इंस्टॉल किया है उनको ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है. व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेटमेंट? मैम एंटर सेकंड नंबर अनदर इनपुट. आप जब तक बोलोगे नहीं, आई विल नॉट टाइप एनीथिंग. So please keep on telling me. Enter second number. Then मैम hmm, we have to assign input as a integer number, so int. right. तो हमें इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. We have seen yesterday how to convert this input to integer. Very good.
So instead of writing two different statements, we can directly do it here. हम यहीं पे ऐसे कर सकते हैं कि जो भी आप इनपुट एक्सेप्ट कर रहे हो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, या तो फिर आप नेक्स्ट लाइन पे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू इंट ऑफ a। ओके, both are equal. Then we have accepted two inputs. Then what should be the next line? When print the sum a plus Print, right? Print में क्या करेंगे? Sum is. Then A plus B मैम। a plus b. Directly मैं यहाँ पे ए लिख प्लस दूँ बी। a plus b. जी मैम, कर्ली ब्रैकेट Okay. Now we will execute that program. Python practice. Okay, so it is asking me for first number, then second number, and the sum is 30. So we have got exactly the same output as expected output, right? हमें ऐसे ही expected था, enter first number, enter second number, and the sum is their sum. हो गया आपका एग्जीक्यूट किया आपने? यस, जिसने इंस्टॉल किया है उन्होंने एग्जीक्यूट किया? किया या नहीं किया? और नो मैम कर रहे हैं। चलो करो जल्दी। Here only I'll solve question 2. बस 3 ही तो स्टेटमेंट है। स्टार्ट करना है सेकंड क्वेश्चन। किसी यस का मैम। हुआ है तो यू कैन शेयर योर यस स्क्रीन, आई कैन सी। किया है किसी ने? शेयर करना है किसी को? मुझे बता दो तो मैं मेरा शेयरिंग स्टॉप कर दूंगी। कर रहे हो क्या आप सीरियसली? मैम मैंने ऑनलाइन कंपाइलर से कर ओके, नो मोबाइल से इश्यू। किया। हाँ, ऑनलाइन कंपाइलर से भी आप कर सकते हो, कोई इशू किया हूँ नहीं है। मैम मैं भी। ओके फाइन, तो प्रैक्टिस करना इज हाँ। इम्पोर्टेंट। आप ऑनलाइन कंपाइलर पे करो या आपने ये विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करके करो, लेकिन यू हैव टू डू प्रैक्टिस, otherwise you will not learn. Okay, that is my main purpose. Now the second question, write a Python program that asks the user for their first name, last name and year of birth, and then print a formatted string using str.format. Okay, now this is important because now you know how to accept the input, right? You know how to print it, but if it is specifically given the print output using str.format, you have to use this, right? So now we'll use str.format to print the string. Okay, so पहले तो ये देखो कि what we have to accept, first name, last name and year of birth. Okay, this is our expected
output hello, then first name, last name, and you were born in that year. Okay, let us start. Tell me what should be the first line. F name equal to input, input, enter first name, right? Same line I'll copy. This will be the L name and input, enter last name, and then what we want, year of birth, right? So birth equal to input, enter year of birth, right? यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, we have to convert it to integer. या नहीं भी किया तो भी चलेगा because we are not performing any calculation. Okay, still I am converting it to integer. And then how to print the message using this str dot format, क्या करना है उसके लिए. अभी मैंने आउटपुट में बताया आपको हाउ टू यूज मैम फॉर्मेट फंक्शन. प्रिंट, उसके बाद में मैम कर्ली ब्रैकेट ओपन. इसके अंदर करेंगे सी हियर द एक्सपेक्टेड आउटपुट. क्या चाहिए हमें यहाँ पे, हेलो, देन कॉमा, देन नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन एक्सक्लेमेशन मार्क, and you were born in 1995. Like this we want our output. तो क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे हम हेलो मैम. हेलो, राइट. जी मैम. देन उसके बाद में मैम कर्ली कर्ली ब्रैकेट, ब्रैकेट, देन एफ नेम. और एक कर्ली ब्रैकेट, राइट, बिकॉज वी हैव टू प्रिंट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, राइट. यस. देन एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद यू वेर बॉर्न इन, यू वर बोर्न इन लिखेंगे मैम. born in, and then again एक और curly कर्ली brackets, ब्रैकेट. right. जी मैम. उसके बाद फॉर्मेट, डॉट फॉर्मेट. dot format, फॉर्मेट. and in format we will give values for those placeholder sequentially. Okay, so first you have to give f name, then l name, and then lastly वर्थ. birth. Okay, so let us execute this. Enter first name, I write my name here. Some mistake is there, that message is not getting printed. I think I have not saved that program. Okay, I'll again execute this program. Okay, so here you can see the output. Okay, but if you see here, there is no space between first name and last name. Okay, so we can give space. If you give space here, it will automatically print the space. Okay. Any doubt? Any doubt in this program? नो no, मैम. no. Okay. Shall we move further to question 3?
Yes, ma'am. Okay. So next question is, write a Python program that takes a user's height in centimeters, weight in kilograms, and calculate their body mass index and print it formatted to two decimal places. Okay, here what is new thing for you? You have to format it to two decimal places. Okay, because whenever you will calculate this BMI, some calculation is there, it will print a long value like 20, यहाँ पे जो 22.49 ऐसी long value print करता है by default. लेकिन what we want that value of BMI only till two decimal places, right? So we do this program now. Tell me, पहले क्या accept करना है? Height. Height. So we will convert it to integer, then input and enter your height. Okay, in centimeters. Then similarly we want weight, enter your weight in kg. Then we have to calculate body mass index. Okay, so formula is already given here, weight divided by height divided by 100 and its square. Do you know in Python how to find out square? Just copy this formula. And double asterisk. डबल एस्टिक सिंबल, वेरी गुड. तो यहाँ पे क्या करना है, पहले तो वेट डिवाइडेड बाय हाइट divided by 100 and then star star 2. This will calculate your BMI. Okay, and now we will print it. Okay, so print क्या करना है, your BMI is, your BMI is. Okay, now tell me what should I do to print BMI. I can write like this, right? Okay, we will Yes, first ma'am. try. We will first try this, and then we will try to print BMI till only two decimal places. Okay, तो पहले तो हम ये execute करते हैं. Enter your height. Let's say 150. Enter your weight 50, and your BMI is, see here how it is printing BMI. It's so long value, but what we want 22.22. इतना ही हमें चाहिए. ओके, तो उसके लिए क्या करना है, किसी को पता है हाउ टू फॉर्मेट इट? No, ma'am. ओके, आई विल शो यू. टू डेसिमल प्लेसेस तक प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, एफ यूज़ करना पड़ेगा, और उसके बाद जितने भी आपको डेसिमल प्लेसेस चाहिए वो उसके आगे आपको देने पड़ेंगे. ठीक है,
So what we will do here, I will write f and then करली ब्रेसेस में हम लिखेंगे यहाँ BMI कोलन कितने 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए तो आई गिव 0.2 and then f. Okay, so this 0.2f, that means this c, this f is for formatted string and this 0.2f is for float values. Okay, don't get confused. ये जो बाहर वाला f यूज किया है वो हमने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए यूज किया है, लेकिन ये अंदर का जो f है that is 0.2f is used for float value. So whatever number you will give here, that many decimal places will get printed. Clear? Okay, now we'll execute this. Again, I will enter height, weight, and now this BMI you can see. It has printed only till 2 decimal places. Okay, if you want to print till 3 decimal places, you can give 0.3. Okay, you can check 150, 50, and C. It has printed till 3 decimal places. Is it clear? Yes, ma'am. Yes. Okay. किया Yes, ma'am. आपने ये एग्जीक्यूट किया? नहीं मैम, सिर्फ वो एडिशन वाला ही किया। अभी तो देख रहे थे मैम। लेकिन बाकी प्रोग्राम्स भी करो, अगर आपको चाहिए तो मैं 5 मिनट्स मतलब इन बिटवीन 5 मिनट के लिए रुक सकती हूँ, लेकिन आई वांट यू पीपल टू प्रैक्टिस दिस। अगर अभी नहीं किया है तो आप बाद में करो, लेकिन प्लीज प्रैक्टिस। ओके, जी मैम। ओके, लास्ट क्वेश्चन विल सी इज राइट ए पाइथन प्रोग्राम। दिख रहा है ना आपको? यस मैम। Ask the user to input 3 numbers and print their average. ओके, ये भी बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। ये हम सिर्फ देख रहे क्वेश्चंस फॉर इनपुट आउटपुट। ओके, दैट इज व्हाई आई हैव गिवन यू वेरी सिंपल क्वेश्चन। जैसे हम आगे कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे, जैसे लूप सीखेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट सीखेंगे, तो वो प्रोग्राम्स भी हम देखेंगे उस टाइम पे। ओके, now we want to accept 3 numbers. Can you tell me how to accept 3 numbers in one line? मैम इनपुट सॉरी इंट इनपुट Okay, input, enter 3 numbers. बस, और क्या करना पड़ेगा इसको? यस, कल देखा था हमने हाउ टू एक्सेप्ट मल्टीपल इनपुट्स। 3 वेरिएबल्स मैम। 3 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे x, y, z। हो गया? नो मैम, और क्या था? एंड में 3 वेरिएबल्स को शायद डॉट में डॉट स्प्लिट था, स्प्लिट, स्प्लिट मैम। राइट, डॉट स्प्लिट मैम। स्प्लिट। So split will split your input value into three different numbers, and it will store it in x, y, and z. Okay, and now we can directly print out its average, right? The average is, कैसे निकालते हैं एवरेज? एडिशन ऑफ होल नंबर डिवाइड बाय 2। x plus y plus z, 2 × 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 24, 24 × 2 = 36, 36 × 2 = 48, 48 × 2 = 64, 64 × 2 = 96, 96 × 2 = 128, 128 × 2 = 256, 256 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 24, 24 × 2 = 48, 48 × 2 = 16, 16 × 2 = 24, 24 × 2 = 48, 48 × 2 = 16, 16 × 2 = 24, 24 × 2 = 48, 48 × 2 = 16, 16 × 2 = 24, 24 × 2 = 16, 16 × 2 = 24, 24 × 2 = 16, 16 × 2 = 24, 24 × 2 = 16, 16 × 2 = 24, 24 × 2 = 16, 16 × 2 = 24, 24 × 2 = 16, 16 × 2 = 24, 24 × 2 = 16, 16 × 2 = 24, 24 × 2 = 16, 16 × 2 = 24, 24 × 2 = 16, 16 × 2 = 24, 24 × 2 = 16, 16 × 2 = 24, 24 ×
divided by 3. Three. ठीक है, execute this. Okay, enter three numbers. So I'm giving 10, 20, 30. Oh, some okay, fine. I got the mistake. See, whenever you are giving, just a second. फिर हमने देखा था ओके, तो अगर आप एक ही लाइन में तीन इनपुट ले रहे हो तो आप यहाँ पे उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते. दैट इज द इशू बिकॉज वी आर यूजिंग स्प्लिट एंड स्प्लिट इज यूज्ड ऑन स्ट्रिंग. तो उसके ऊपर हम यहाँ पे इंट नहीं कर सकते बिकॉज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम. ओके, तो यहाँ पे हमें ये कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा. हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में. ठीक है, तो इंट एक्स when y equal to int y and z equal to int z. Now I think it will work fine. Enter three numbers. Okay. And it has calculated the average. Average is 40. I think this average is not correct. We should put this in bracket. So you can see in first try maybe your program will not get correct, but gradually you can refine your program. Gradually you can correct your mistakes and come out to the correct output. Right now the average is correct. Previously ये क्या कर रहा था, x plus y हो रहा था and z divided by 3 उसमें ऐड हो रहा था. Okay, so that is not correct average. So what we did, we just applied bracket to this x plus y plus z and then we divided it by 3. So now it is giving correct average. Clear? Yes ma'am. जी ma'am. Okay, any doubt till now? No ma'am. Okay, fine. So see, I have your syllabus, okay, but I have divided your syllabus into multiple parts because in the format I accepted, I received your syllabus was not like I feel it was not in proper format because it was not divided into individual units. Okay, it is divided into multiple modules, like 30 modules were there. आपके पास है आपका syllabus? Yes ma'am. Yes, ma'am. तो वो ऐसा ही है ना कि 30 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है. Yes, ma'am. हाँ, so what I did is instead of creating separate PPT for every module, I have grouped some topics into multiple unit. तो ये जो आपको कलर कोड यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने क्या किया कि जैसे मेरा हमारा फर्स्ट पीपीटी है उसमें मैंने ये फर्स्ट 5 पॉइंट्स उसमें इंक्लूड कर दिए. ओके, देन in next lecture we will start with the module 9 because this module we have completed from module 1 to module 5, right? हमने introduction to python देखा, history देखा, program structure, then input output देखा, interface और IDE देखा, installation देखा, right? So we have completed from module 1 to module 5.
After that, the module 6 is memory management, object creation, object properties. These are little bit advanced topics. Okay, so these topics I feel we should cover after these basic concepts. Okay, so in next lecture we will start with module 9. Okay, so from module 9 to module 14 we will cover, and after that we will start with module 15, 16, 17, that I will include in one unit, and then we'll start with this module 18 till 24, and in between that I will merge this 6, 7, 8. Got it? Because here yes, memory yes, management, ma'am. object related concepts are there, and those belong to these topics only, classes, objects, and all. So we will see these modules during this. Okay. After that, we'll see this from 25 to 28, and then lastly we'll see 29 and then 30. Okay. So ये जो यहाँ पे कलर कोड दिख रहा है, अकॉर्डिंगली आई विल प्रिपेयर द स्लाइड्स जो मैं पीपीटी आपके साथ शेयर करूंगी. तो ये जो फर्स्ट वाला पीपीटी है उसमें आपको मिलेंगे मॉड्यूल 1 to 5, राइट. देन सेकेंड पीपीटी जो होगा उसमें मिलेंगे आपको मॉड्यूल 9 to 14. देन थर्ड जो पीपीटी होगा उसमें आपको मिलेगा 15, 16, 17. देन उसके बाद का जो स्लाइड होगा उसमें आपको ये सारे पॉइंट मिलेंगे. लाइकवाइज आई विल प्रिपेयर माय पीपीटी, ओके, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू स्टडी. ओके, कुछ डाउट है आपको, कुछ पूछना है, कुछ No, एनीथिंग ma'am. लाइक रिलेटेड टू पाइथन और एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू सिलेबस? नो. ओके, ये पाइथन जो सब्जेक्ट है आपको वो कंपलसरी है या ऑप्शनल है, इलेक्टिव है? इलेक्टिव है मैम. Elective. इलेक्टिव है. ओके, so only 4 people have chosen Python. No, ma'am. 9. 9 people have chosen. Then why other people are not joining? We don't know, ma'am. नहीं पता. आपके ऑफलाइन होते हैं क्लासेस? Yes, ma'am. कॉलेज मतलब जाते हो आप? Yes, ma'am. But अभी तो छुट्टी. अभी छुट्टी Summer लग गई vacation. आपको? तो छुट्टी 30 में से थी ना? नहीं मैम, 18 में से. 18 में से छुट्टी लग गई आपको? जी मैम. यस और मैम. 23 जून तक. ओके फाइन. लेकिन ड्यूरिंग वैकेशन यू कैन कंटिन्यू विद द क्लासेस. Yes, ma'am. So we will continue, but tell your friends to join the class. मिस होगा तो फिर लिंक उनका ब्रेक हो जाएगा, तो नेक्स्ट टॉपिक्स उनको समझ में नहीं आएंगे, है ना. तो आपका अगर यस कुछ मैम. अनऑफिशियल ग्रुप है तो उस पर डाल दो कि मैम ने बताया है क्लासेस रेगुलरली करने अटेंड करने के लिए. और कॉलेज में भी आपके ये रिकॉर्ड जाता है कि ओनली 4 पीपल हैव अटेंडेड द लेक्चर, so it's not good for you. ठीक है. Yes, ma'am. यस मैम. Will told. Okay, fine. So for today we will stop. We'll continue in the next lecture. I think today is Saturday. Tomorrow I will not take any lecture. From Monday we'll again start. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू मैम.